so far till what we did yesterday? All clear? We're coming on to chapter 23 of the nutshell series, that is cross curves of stability. So we're on to A-shape problems. There was a message which I had floated around yesterday on the WhatsApp group. I'd received a call from this girl. She's doing research from Punjabi University, Patiala. And so she sent a message as a part of her PhD research on noise levels and other MLC issues pertaining to seafarers. She's got a lot of relatives in our profession, so that's the reason why she chose that topic. Because I asked her, I said, "What's the reason for that? For choosing such an abstract topic?" So she said that she's got relatives, a lot of uncles and cousins and a brother and all that. So I agreed to sending it to all of you. Uh, Name and email IDs are optional, basically. So you want to not disclose your email ID, it's an option. And because that's what I agreed on with her. I said, I don't want any kind of a later on this thing regarding identity disclosure. So she's agreed to that. So you all can fill up the survey form and then submit it. Okay. Okay, sir. All right. सर हाँ जी. सर जैसे कल वो वेसल एट एंगल ऑफ लोल का हमने डायग्राम बनाया था, तो उसमें जो हम एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे थे, तो वो जो स्टारबोर्ड साइड में जो अपना ग्राफ बनेगा उसकी बात करते हैं, या फिर जो शिप ड्रॉ करेंगे उसके सेंटर लाइन पे जो लिस्टेड है तो उसका एरिया की बात करते हैं हम सर? एरिया जब भी हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट द नेट एरिया, द नेट रेजिडुअल एरिया जिसको कहते हैं. तो एरिया अबव द बेस लाइन इज पॉजिटिव, एरिया बिलो द बेस लाइन इज नेगेटिव. तो नेट एरिया पॉजिटिव माइनस द नेगेटिव. सर दैट इज ऑन द ग्राफ, वो उस कर्व के नीचे, या फिर जैसे कि अगर लिस्टेड है, हम कहेंगे स्टारबोर्ड साइड लिस्ट है, तो जब एंगल ऑफ लोल की वो शिप ड्रॉ करी थी तो स्टारबोर्ड साइड में शिप लिस्टेड है तो उसका एरिया ज्यादा आ रहा था, बट वो एरिया अंडर द कर्व इज लेस. यू आर मिक्सिंग अप टाइप 2 एंड टाइप 3. टाइप 2 अलग है, टाइप 3 अलग है, दोनों को मिक्स मत करो. अगर आप एंगल ऑफ लॉल की बात कर रहे हो तो खाली एंगल ऑफ T2 की बात करो, अब T3 की बात मत करो. तो जस्ट स्टिक टू T2. तो T2 का अगर ग्राफ देखोगे, बेसलाइन के ऊपर देखोगे और बेसलाइन के नीचे देखोगे. तो बेसलाइन के ऊपर पॉजिटिव है, बेसलाइन के नीचे नेगेटिव है. तो इनिशियली जो T2 कर्व है वो पहले नीचे जाता है फिर ऊपर आता है. तो जो नीचे जा रहा है वो नेगेटिव एरिया है. ओके सर, ओके, वो ठीक है, वो T3 में देखने लग गया था. ठीक है सर, वो T2 में जो आपने बनवाया उसमें एरिया देख लिया. तो सर इसमें जैसे क्वेश्चन था कि ड्रॉ अ कर्व फॉर अ वेसल एट एंगल ऑफ लोल, तो उसमें तो ये T2 बना देंगे. फिर उसने बोला था कि अब रिमीडियल एक्शंस क्या लोगे कर्व के हिसाब से बताओ, कि मतलब वहां पे एक्सप्लेन. तो उसमें सर हम पहले एरिया जो हमें बताना था, फिर वो कुछ कैसे स्टार्ट करें जैसे उस पॉइंट को? रेमेडियल एक्शंस आई विल डिस्कस सेपरेटली. जो एंगल ऑफ लॉल की मैंने डिस्कशन करनी है वो अलग है, वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है.
वो 7 पॉइंट ये नहीं लिखने उसमें। ना 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 ना, ओके सर। रेमेडियल एक्शन तो अलग है ना, अलग चीज है, बिल्कुल ही अलग हो गई। दैट इज अ सेपरेट रूम फॉर डिस्कशन। वो जो हमने, आई डोंट नो हमने अभी तक वो चैप्टर किया है कि नहीं किया, एंगल ऑफ लॉ, करेक्टिव एंगल, करेक्टिव एक्शन का, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। नहीं सर वो नहीं। अच्छा अभी नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट मंथ में आएगा। ओके। सो सो दैट इज वो सेपरेट चीज। ओके सर ओके। एनी अदर डाउट? Okay. All right. So we're talking about cross curves now. That is A shape. So in this, basically, what happens is that the let's say the assumed G, the assumed kg is equal to 10 meters. The actual kg actual kg is equal to 8 meters. That is, actual is less than assumed. 8 is less than 10. So this will be x. This is theta.
This is the uncorrected GZ. This is the corrected GZ. So GX plus XZ is equal to corrected कैपिटल GZ. इसको छोटा कर देता हूं. दिस इज अनकरेक्टेड छोटा GZ. और corrected GZ is equal to GX plus XZ is equal to small GZ. And that small GZ is known as uncorrected. So is equal to small GZ uncorrected plus GX is equal to GG sin theta. This is GGV. This is the correction. Due to vertical shift of G. ये क्या लिखा है सर इसके नीचे आपने? Correction due to vertical shift of G. सर ये आपने GV लिखा है ना, GGV साइन थीटा. GGV sin theta. V is for vertical G. V is for vertical shift of G. पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसको समझाना शुरू करूंगा. Let me know when you are ready.
Sir, for this assume Z that small g and z is also g only, z is also small, So that can be small, that can be big also, doesn't matter. So that is उसको मैंने बड़ा ही लिखा है. Okay, sir. But it can be small also, it doesn't matter. That doesn't matter. Basic Okay, idea sir. is to create a distinction between small gz and capital GZ. So you want to write both as small, I'm okay with it. No issues. Okay, sir. Let me know when you're ready to write. Ready, sir. Okay. Okay, write down. Cross curves are curves drawn by the shipyard and made available in the stability booklet. They are drawn at an assumed kg of the ship. सर दोबारा बोलना, that an They are drawn at an assumed kg of the ship. They are drawn at an assumed kg of the ship. Say 10 meters. Hence, they give an uncorrected value of GZ. Hence, they give an uncorrected value of GZ. But the actual kg of the ship but the actual kg of the ship is different from the assumed kg. Say 8 meters. Since the actual kg of the ship is lower than the assumed kg, hence the writing lever
at actual kg will be greater than the value. Sir, please repeat from hence. Since the, what is the sentence before this? Just repeat the sentence before. Since the actual kg of the ship is less than the assumed kg of the ship. Okay. Since the actual kg of the ship is less than the assumed kg of the ship, hence the righting lever of the ship will be more than or greater than the righting lever obtained from the cross curves. Thus, a correction within bracket capital G X needs to be added. Sir, correction ये हो गया. Thus, a correction within bracket GX capital GX in caps. Thus, a correction GX needs to be added to the uncorrected small gz value obtained from the cross curves. This correction Gx is equal to small g capital G V sin theta. Similarly, in another case, if the actual kg of the ship is more than the assumed kg, supposing actual kg is 12 मीटर, अब 12 is greater than 10. That means actual is greater than assumed. तो ये जो करेक्शन है ये माइनस हो जाएगी. बाकी सब कुछ सेम रहेगा. सो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा करेक्टेड जीजेड इज इक्वल टू अनकरेक्टेड जीजेड प्लस माइनस GGV साइन थीटा. ये समझ में आ गया. केस नंबर 1 में प्लस है, केस नंबर 2 में करेक्शन
का साइन माइनस है. Is this okay with everybody? Yes, sir. Okay. So therefore, ये मैंने फॉर्मूला कंबाइन करके प्लस माइनस बना दिया. बेसिकली यू टू जस्ट रिमेंबर कि अगर मेरी एक्चुअल केजी नीचे है, सो मैं रिमेंबर द ट्राइंगल एपेक्स अपवर्ड. द मोर हायर यू गो, द बेस reduces. If the base reduces, that means writing lever reduces. If the writing lever reduces, you need to subtract something. What is that something? GGV sin theta. In case you go below, जितना नीचे आओगे, base increases. Correction will be positive. You need to add something. What is that something? GGV sin theta. So नीचे आ रहे हो प्लस है, ऊपर जा रहे हो माइनस है. ठीक है? Is that okay? It is dependent on the base of the triangle, the width of the triangle. And that width is nothing but the writing lever with GZ. Hanji, any doubts so far? सर ये क्रॉस कर्व फिर सिर्फ ए शिप के लिए वैलिड है? करेक्ट, खाली ये शिप के लिए वैलिड है. इसमें ए आपको शिप में हम सर ए शिप में हम कोई भी शिप शेप कंसीडर करेंगे तो यही मतलब यही रहेगा प्रिंसिपल क्रॉस कर्व्स का. बेसिकली ये शिप का मतलब है आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ होगा, वहां पे लिखा होगा अ शिप with following data. नहीं सर, फिर हमने इसको ट्रायंगुलर मतलब ये ट्रायंगल बना के जो हमने मतलब शो किया है, तो ये ट्रायंगुलर शेप के लिए है या फिर किसी भी शेप के लिए के जी और मतलब ये इसको ट्रायंगल तो अरे बाबा कहाँ चले गए. ट्रायंगल तो डिफरेंट चीज है. कहाँ पे ट्रायंगुलर शेप कहाँ से लेके आ गए आप? ये तो जहाज है. दिस इज अ शिप. This is a ship ना, which is inclined like this. ये ऐसा है. ये जहाज है. अब ठीक है. यस सर. ये शिप है. She is floating in water. ये वाटर लाइन है. Now is it okay? हाँ सर, अभी थोड़ा समझ में आया. मतलब पहले लग रहा था कि ऐसे ही मतलब अपराइट शिप है तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है. This is an inclined ship like this. So basically ये डेटा जो है, ये जो अनकरेक्टेड वाला, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. This will be given to you in the question. So आपने खाली GGV sin थीटा कैलकुलेट करना है और करेक्शन लगानी है, और ये देखना है कि प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए. आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है. ये चीज आपको समझना जरूरी है. तो ये बदलेगा एज पर द केस. So now if I give you a question with the data in it, a vessel of displacement something 10,000 tons, kg 8 meters, 6 meters, has the following writing levers. When I tell you rough weather,
causes 400 tons of deck cargo to go overboard. तो ऊपर से कार्गो जा रहा है बाहर, तो आपकी रिजल्टेंट केजी किस डायरेक्शन में जाएगी? Downwards. डाउनवर्ड जाएगी. करेक्शन का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. Add. पॉजिटिव. रिजल्टेंट केजी नीचे जा रही है, बेस बढ़ रहा है, बेस बढ़ रहा है, करेक्शन का साइन पॉजिटिव. आई नीड टू ऐड समथिंग. व्हाट इज दैट समथिंग? GGV sin theta. Is that okay? Okay, sir. नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा सर, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव करेक्शन आएगी. बस सिंपल. I am loading 100 tons of cargo on the main deck. नेगेटिव हो जाएगी. सिंपल. मैं ऊपर में कुछ लोड कर रहा हूं मेन डेक पे, मेरी जहाज की जी बढ़ने वाली है. सिंस मेरे जहाज की जी बढ़ने वाली है, बेस छोटा हो रहा है, बेस छोटा हो रहा है, करेक्शन का साइन माइनस. व्हाट इज द करेक्शन? GGV sin थीटा. सर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो एक्चुअल है वो जो आफ्टर लोडिंग है वो एक्चुअल होगा और जो पहले था वो एज्यूम्ड है. बस that is how it is. That is how it is. So is that okay? The formula? यस. So ये तो कहानी हो गई वर्टिकल शिफ्ट ऑफ जी. अब अथॉर्ड शिफ्ट में आ जाते हैं. शिफ्ट सो अथॉर्ड शिफ्ट में करेक्शन इज ऑलवेज माइनस. इट इज माइनस GGH cos थीटा. इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, इसमें हमेशा माइनस ही रहेगा. ये हमेशा माइनस होगी एंड दिस विल बी करेक्शन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ जी. ये मेरा पूरा का पूरा लंबा चौड़ा कंबाइंड फॉर्मूला बन जाएगा फॉर ए शिफ्ट क्वेश्चंस. That is corrected GZ is equal to the uncorrected GZ. ये जो uncorrected GZ है, this will be given to you in question. Given in the question. उसमें मैंने ये दो करेक्शंस लगानी है, वर्टिकल शिफ्ट ऑफ जी, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ जी. वर्टिकल शिफ्ट ऑफ जी में साइन थीटा लगता है, प्लस माइनस होता है एज पर द केस GGV. हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में हमेशा माइनस होता है, GGH होता है, cos थीटा होता है. ये लंबा चौड़ा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा.
तो सर अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिया हो तो ये प्लस माइनस वाला नहीं यूज होगा ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल। अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो ये वाला जीरो हो जाएगा, खाली माइनस जी जी एच कॉस थीटा हो जाएगा। अगर सिर्फ वर्टिकल हो जाएगा तो ये वाला जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये होगा। Is this formula understood by all? यस सर। So अब मैं आपको एक कोई क्वेश्चन देता हूं, उसमें मैं कहता हूं कि a ship is given displacement 10,000 tons, उसका जीजेड दिया हुआ है, उसकी केजी दी हुई है। रफ वेदर causes $400 tons of cargo to shift from number 2 main deck port side to number 2 twin deck starboard side। सर एक बार रिपीट रिपीट करो इधर। रफ वेदर ने नंबर 2 पोर्ट साइड मेन डेक का कार्गो को शिफ्ट किया तो नंबर 2 ट्विन डेक स्टारबोर्ड साइड, यानी कि नंबर 2 पोर्ट साइड से कार्गो शिफ्ट होके नंबर 2 स्टारबोर्ड साइड नीचे आ गया। सर तो वर्टिकल वाली ऐड हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल तो माइनस होगी। इज दिस ओके विद एवरीबॉडी? वर्टिकल वर्टिकल वाला माइनस होगा। कोई नंबर 2 पोर्ट साइड मेन डेक से कार्गो होगा सर, नीचे आया बेस बढ़ेगा। नंबर 2 स्टारबोर्ड ट्विन डेक पे आ गया कार्गो, तो केजी वर्टिकल डायरेक्शन में कहां जा रहा है? क्या रहा है सर, नीचे। बढ़ रहा है, प्लस हो जाएगा। नीचे। तो करेक्शन क्या होनी चाहिए? ऐड। पॉजिटिव ऐड होगा। ऐड होगा। उसका क्वांटम कितना होगा? जी उसका जी जी वी साइन थीटा होगा, सो प्लस जी जी वी साइन थीटा। जी सर। अब ये एथॉर्डशिप पे आ जाओ, अब एथॉर्डशिप पे आ जाओ। एथॉर्डशिप का क्या साइन होगा? माइनस नेगेटिव। कितना होगा क्वांटम, कितना होगा? जी जी एच cos theta। cos थीटा। ये समझ में आ गया सबको? नहीं आया सर, स्टारबोर्ड में जाएगा तो नेगेटिव क्यों होगा सर? भाई ये अभी तो लिखा है यहाँ पे, ये हमेशा नेगेटिव रहता है, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे स्टारबोर्ड हो। अगर एथॉर्डशिप में जा रहा है तो करेक्शन माइनस है, उससे स्टारबोर्ड या पोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये लिस्ट कॉज कर रहा है। मैं खाली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल की बातें कर रहा हूं, मैं पोर्ट एंड स्टारबोर्ड की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी दिशा में फ्रॉम द सेंटर लाइन बातें कर रहा हूं। इज दैट ओके और नो? यस सर, ओके। Supposing there is a condition of a ship given,
and I take ballast in number 3 starboard DB tank. What will be the sign of the corrections? पॉजिटिव नेगेटिव Positive and negative. Positive and negative. वर्टिकल पॉजिटिव और Supposing I take ballast in number 3 center double bottom tank. तो सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव और उधर Positive horizontal 0. हॉरिजॉन्टल तो होगा ही नहीं। Supposing bad weather throws the cargo overboard from number 3 main deck starboard side. Both negative, sir. नेगेटिव नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, is this okay? इस ऊपर से कार्गो लोड Yes, हुआ sir. तो इस पड़ेगा। Supposing I transfer ballast from top side tank 1 starboard to top side tank 1 port. तो भी दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। ओनली वन नेगेटिव सर Only sir horizontal हॉरिजॉन्टल negative. करेक्शन हुई वर्टिकल 0 और नेगेटिव। horizontal negative. सोचो। वर्टिकल को होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं W होगा। सेम है नहीं होगा। और हॉरिजॉन्टल नेगेटिव। ओरिजिनल केजी जो जहाज की दी हुई थी वो तो कोई 10 मीटर पे दी हुई होगी। मेरी केजी जो है टॉप साइड टैंक है, इसका मतलब ऊपर में है ना, तो वर्टिकल तो हमेशा ही होगा irrespective. Vertical will always be there in A ship, irrespective. It is the horizontal which is going to be a debatable issue. बट सर नहीं सर, इसमें but वेट तो ऊपर डिस्टेंस तो आया नहीं सर, वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रांसफर है जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है, जो यार्ड ने दिया है आपको, शिप यार्ड ने, वो तो शायद 10 मीटर पे दिया है। आपके जहाज की केजी अभी 10 मीटर पे बैंग ऑन तो नहीं होगी, शायद 11 मीटर होगी, शायद 8 मीटर होगी। अगर आप टॉप साइड टैंक का बैलेस्ट को शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम स्टारबोर्ड टू पोर्ट, ओके सर, ओके सर, मतलब इनिशियल जो केजी दे रखी है जो एक्चुअल में है उसके रिस्पेक्ट में तो अभी भी चेंज ही है। करेक्ट। आफ्टर ट्रांसफर आल्सो इट इज चेंजिंग, तो ठीक है सर। जो अभी आप जिस कंडीशन में हो वो आप इनिशियल कंडीशन में तो, अब यार्ड वाली कंडीशन में तो हो नहीं, आप यार्ड से तो दूर हो ना। यार्ड ने बोला कि 10 मीटर में बना दिया, मैंने डेटा आपको दे दिया जी, ये जीजेड की वैल्यूज दे दी आपको, ये वाली ये यार्ड ने दे दी है। आपने कोई बैलेस्ट डेक 3 स्टारबोर्ड का 3 पोर्ट पे किया ट्रांसफर, आपकी तो जी कुछ और है ना इस वक्त। तो इन ए शेप vertical correction will always be there. It is the horizontal which is going to, is the list going to be there, yes or no, that is going to decide. तो vertical तो हमेशा होगी, ठीक है। तो इधर क्या हम दो बार निकालेंगे सर? सर जैसे- साइन क्या लेंगे मगर इसका सर? हाँ जी,
इसका साइन क्या लेंगे सर? करेक्शन तो होगी बट इसका साइन क्या होगा सर? वो तो साइन थीटा होगा ना, फॉर्मूला आएगा जो भी थीटा नहीं की तो वैल्यूज होंगी। पॉजिटिव या नेगेटिव वो बोल। अच्छा, टॉप में टैंक था ऊपर का, जी सर। ऊपर, तो इसका मतलब ऊपर ऊपर वाला है ना। तो बट सर अब अभी जैसे आपने बोला कि टॉप साइड टैंक पोर्ट से, स्टारबोर्ड से टॉप साइड टैंक पोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, तो करेक्शन तो दैट इज ऑलवेज देयर, वो ठीक है सर। बट अभी इस केस में साइन क्या लेंगे सर इसका, पॉजिटिव नेगेटिव? बिकॉज आप ऊपर का टैंक है, उसमें अब जो वैल्यूज आपको दी हुई होंगी क्वेश्चन में, जी सर। जो वैल्यूज दी हुई होंगी वो वैल्यूज आप लोगे। अगर एज्यूम्ड केजी आपकी 10 मीटर है और आपकी एक्चुअल केजी आपको 11 मीटर दी हुई है तो माइनस होगी। अगर एक्चुअल केजी आपकी 9 मीटर दी हुई है तो पॉजिटिव होगा। ओके सर, मतलब अच्छा, जैसे जो ये तो इनिशियल सर से जो डिफरेंस है उसी वही साइन ले लेंगे। बेसिकली जो इनिशियल से आपकी वैल्यू ऊपर है नीचे है वो आप वैल्यू से देखोगे, वो आपका डिटरमिन करेगा साइन वर्टिकल ओके सर, डायरेक्शन का। ओके सर, ओके। ठीक है, ठीक है सर। और अगर वो केजी सेम है तो फिर तो जीरो लेंगे ना सर। अगर केजी सेम है, अगर बुलजाई की केजी है वो जो कि कभी होगी नहीं, बट ठीक है वो एज हाइपोथेटिकल केस, तो देन करेक्शन विल बी 0। तो सर इसमें दो बार निकालेंगे, जैसे एक बार तो इनिशियल जो भी करेक्शन लगनी है क्योंकि कर्व में अलग केजी के हैं। इनिशियल केजी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, सर उसमें फाइनल केजी की आप निकालोगे या जीजीवी निकालोगे, दोनों में से एक चीज निकालोगे। सो जीजीवी will be equal to small w dv upon capital W final. Small w is the weight being shifted or loaded. dv is the vertical distance through which the weight is shifted. Capital W final is the final displacement of the vessel. Similarly, GGH is equal to small w dh. dh is the horizontal distance through which the weight is shifted. And in case you're loading or ballasting, the distance from center line. And capital W final is the final displacement of the vessel. ठीक है, it will become more clearer tomorrow when I do the numerical. जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो क्लियर हो जाएगा, बट बेसिकली ये फंडामेंटल्स यही रहेंगे, जो ये प्लस और माइनस का साइन है वो याद रखना बस। ठीक है, इज दैट ओके? चलो कल मिलते हैं, then we'll do the numerical, then it will become more clearer. बट ये इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ये साइंस को। I want you to just revise the signs. So please just go through chapter 23 of Nutshell series. उसका थ्योरी पार्ट जरा एक बारी देख लेना, चैप्टर 23।